नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे बोलिए जहाँद्वारा आप प्रतिदिन एमती नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आसन देखा आज गुरुत्वपूर्ण खबरटी जो थी कि आम आलोचना करवा माननीय सुप्रीमकोर्ट को गोटे गुरुत्वपूर्ण निर्देश बा राय आसी कि जो रायटी समस्त सरकारी कर्मचारी लागू हम से माने राज्य सरकार कर्मचारी हूँ कि केंद्र सरकार कर्मचारी। तो माननीय सुप्रीमकोर्ट को जो राय अच्छी आम से विषय आज आलोचना करवा। दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यटन देखिए, निश्चय कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलिए। तो आसतु आरंभ करिए आज खबरटी। ये देखो माननीय सुप्रीमकोर्ट को ऑर्डर मुझे देखी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑन रिक्वेस्ट कैन नॉट क्लेम एक्जिस्टिंग सीनियरिटी इन न्यू पोस्ट। माननीय सुप्रीमकोर्ट ये गुरुत्वपूर्ण राय देती। तो ये कौन कहते सच ट्रांसफरीज आर जनरली प्लेस्ड एट द बॉटम बिलो द जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन न्यू कैडर और डिपार्टमेंट द कोर्ट ऑब्जर्व। ताली कही जो ट्रांसफर जी ऑन रिक्वेस्ट से मोस्ट जूनियर मोस्ट जो एम्प्लॉय थी तांकर बिलोरे तले से रे कैडर रे। द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट द ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी कर्मचारी जन अच्छा ट्रांसफर होती एम्प्लॉय अपन देयर रिक्वेस्ट जदि ट्रांसफर होती कैन नॉट बी क्लासिफाई एज ए ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेटा को आम पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसफर बोली कहि परिबा नै। इट फर्दर हेल्ड दैट an employee cannot claim seniority based on their previous position। एवं जड़े सरकारी कर्मचारी सीनियरिटी जो थिला तांकर आगुरु तो ट्रांसफर पर से क्लेम करें आज सीनियरिटी रिसेट अपन ए रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफर। तो ये कही इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अच्छा होल्डिंग ए पर्टिकुलर पोस्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट ही कैरीज विथ हिम एक्जिस्टिंग स्टाटस इंक्लूडिंग सीनियरिटी टू द ट्रांसफर पोस्ट। ताले कही जिते जड़े सरकारी कर्मचारी पब्लिक इंटरेस्ट रे बा बृहत स्वार्थ दृष्टि जनसाधारण स्वार्थ दृष्टि ट्रांसफर रखे से सी सीनियरिटी बजाय रखिए एक्जिस्टिंग पोस्ट अनुसार। हाउएवर इफ एन ऑफिसर इज ट्रांसफर एट हिज ओन रिक्वेस्ट जिते जड़े कर्मचारी निज रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुए सच ए ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय विल हैव टू बी अकोमोडेटेड इन द ट्रांसफर पोस्ट subject to the claim and status of other employee at the transfer place। जोटी की ट्रांसफर हे आर देयर इंटरेस्ट कैन नॉट बी varied without there being any public interest in the transfer subject to specific provision of rule governing the services। such transfer जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बा सरकारी कर्मचारी अच्छा जनरली पेस्ट एट द बॉटम से सबुठारु जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय तले रखा। एटी कही बिलो द जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन द कैटेगरी इन द न्यू कैडर और डिपार्टमेंट द कोर्ट ऑब्जर्व। तापर देखा कौन एग्री बाय द हाई कोर्ट डिसीजन द स्टेट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एवं जो राज्य सरकार हाई कोर्ट रे निराश होगा से माननीय सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होते जोटी की ओवररूलिंग द हाई कोर्ट डिसीजन। एटी माननीय जजमेंट ऑथर बाय जस्टिस नरसिम्हा held that since the respondent voluntarily sought to the transfer and contested to being placed at the bottom of the new cadre, she cannot claim seniority। जे निजर निजे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हम सी क्लेम सीनियरिटी क्लेम करें फ्रॉम हर इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट as this would be unfair to existing employee in new cadre। न्यू कैडर एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय को एटा अनफेयर हो बोली माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय कही। The court noted that the High Court and the Tribunal erred in signifying request-based transfer as a public interest transfer। जोटी की माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते we are of the opinion that the Tribunal as well as the High Court committed an error directing the appellant to grant seniority to the respondent in cadre of the first division assistant with effect from the date of which said respondent has entered service in the cadre staff nurse जोटा की 5/1/1979 अनुसार इंस्टेड ऑफ 19/4/1989 when she was appointed in the new cadre of the first division assistant the court observed। ताले मोटामोटी भाव कह गले द बेंच ऑफ जस्टिस PS नरसिम्हा एंड मनोज मिश्र heard a case from the
कर्नाटक हाई कोर्ट इनवॉल्विंग ए स्टाफ नर्स अपॉइंटेड जी होते हु sought a cadre change to the first division assistant due to medical alignment. The medical board confirmed her incapacity. She agreed in writing to place her at the bottom of new cadre. ता सहित देखिए द कर्नाटक गवर्नमेंट अप्रूव और ट्रांसफर एंड फिक्सिंग हर सीनियरिटी फ्रॉम जोटा कि से देइथिले सी चैलेंज दिस इन 2017 आर्गिंग हर सीनियरिटी शुड बी डेट बैक टू द हर ओरिजिनल अपॉइंटमेंट अनुसार तांको दबा कथा. द कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट रूल इन हेयर फेवर. हाईकोर्टर मध्य से न्याय पाई माने तांको जजमेंट तांको सपक्ष दिया साइटिंग स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस जोटा कि होता श्री के सीतारामुल मुझे प्रति हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्टर केस रेफरेन्स नि जाए which treated medical based transfer as public interest transfer allowing retention of original seniority बोली एटी कहला. Aggrieved by the high court decision the state appealed to the supreme court appeal करते. The court held that the high court erred relying on Sri Sitaramalu stating that it is not correctly decided. Instead it approved the ruling of M.K. Jagdish versus Registrar General High Court of Karnataka जो गोटे केस होता which the High Court failed to consider the present case. In M.K. Jagdish case रे the employee had also given an undertaking जोटा कि 2000 मसीह to be placed at the bottom of the new cadre and the High Court ruled that seniority should be counted from the date of transfer not the initial appointment. ताले एटी देखिबा according to the court allowed the appeal and set aside the imposed decision recording the respondent seniority from the date of transfer to the new cadre. ताठी मध्य माननीय सुप्रीम कोर्ट मध्य एटी तांकर गुरुत्वपूर्ण राय रे कहिसंती. तडी जो सरकारी कर्मचारी माने अछंती सेमाने एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण ऑर्डर थिला जो ट्रांसफर क्षेत्र रे. तो आज ये गुरुत्वपूर्ण खबरटी आपको केमती लगे दयाक निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे बोलिए जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर. धन्यवाद.